एवरीवन, वेलकम टू ग्रो मेड। इस वीडियो में हम ऑब्स्टेट्रिक्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो एफएमजी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के पहले कि कौन से टॉपिक्स आते हैं और किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वन लाइनर्स आते हैं, क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, इमेज बेस्ड। तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। गायनेकोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ पार्ट 2 इन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑब्स्टेट्रिक्स। तो लेट्स स्टार्ट। ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है लेबर के स्टेजेस, इट्स मैनेजमेंट एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द चाइल्ड। द ब्रीच प्रेजेंटेशन, अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो हम इसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। देन नॉर्मल प्रेजेंटेशन, द सिफारिक प्रेजेंटेशन एंड द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, द प्रेजेंटिंग पार्ट। Then management is how do we manage it? The lower segment cesarean section कब करते हैं and normal vaginal delivery कब करते हैं. So these all our questions are being asked repeatedly. तो लेबर के स्टेजेस के बारे में भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आर आस्क्ड. तो लेबर का स्टेज 1 ये क्या सिग्निफाई करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस टिल द सर्वाइकल डायलिटेशन, फुल सर्वाइकल डायलिटेशन. एंड स्टेज 2 फ्रॉम द सर्वाइकल डायलिटेशन टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस, then delivery of the fetus to the delivery of the placenta, and 1 hour observation consist of the stage 4. तो स्टेज 1 में हम दे सकते हैं प्रोकोलाइटिक्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड कि प्रोकोलाइटिक्स हम कब दे सकते हैं. तो ये हम देते हैं स्टेज 1 में लेटेंट फेज में, तो ये याद रखना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द प्रीटर्म लेबर. प्रीटर्म लेबर के यूजुअली कॉजेज पूछे जाते हैं. व्हाट आर द कॉजेज फॉर द प्रीटर्म लेबर? लाइक इन्फेक्शन, एनाटॉमिकल एंड ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूटेरस. तो मोस्ट कॉमन कॉज तो उसका वही है कि ये इन्फेक्शन है. देन अदर कॉजेज भी है इसकी. और वैसे हम पता भी लगा सकते हैं कि प्रीटर्म लेबर कैसे हो सकता है. अगर यूएसजी पे इसकी डायलेशन जो है, इफ इट इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, देन वी कैन प्रिडिक्ट दैट इट कैन बी प्रीटर्म लेबर. तो प्रीटर्म लेबर बोलते किसको है? अगर डिलीवरी होगी लेस देन 37 वीक्स, देन वी call it as a preterm labor. So these are some potential one-liners being asked on the preterm labor. फिर नेक्स्ट टॉपिक, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अ मस्ट डू टॉपिक. एक्टोपिक प्रेगनेंसी की यूजुअली वन लाइनर्स पूछी जाती है. साइट, मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड दैट इज द एम्पुला. तो साइट मोस्ट कॉमन द एम्पुला. देन कॉजेज क्या हो सकती है इसकी? इट इज़ यूजुअली कॉजेज होती है इसकी यूजुअली PID, मोस्टली इन्फ्लेमेशन. यहाँ पर लिखा है मोस्टली इन्फ्लेमेशन, जैसे TB हो गया, या फिर पेशेंट को प्रीवियस एक्टोपिक है, फिर पेशेंट ने अगर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया है तब भी उसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है. तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज की मैनेजमेंट के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर ट्यूब में है और अगर ट्यूब अनरप्चर्ड है तो हम कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, और इफ इट इज नॉट रप्चर्ड देन व्हाट विल वी डू, एंड मेडिकल मैनेजमेंट कब करेंगे. तो अ वेरी मस्ट डू टॉपिक. Another important topic is the pelvis types. तो pelvis के 4 टाइप्स है. gynecoid pelvis, which is most commonly seen in the female. फिर anthropoid, android and pepiculoid. Questions are being asked on the shape. Round shape है, उसकी oval shape है. Then it's which is most common found in the females. फिर which is a male type of gynecoid, which is a male type of pelvis. तो ये सारे points pelvis की बहुत ज़्यादा important है. Then placenta. प्लेसेंटा के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्पेशली ऑन द टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा के टाइप्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है. यूजुअली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है. इमेज दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा प्लेसेंटा है. एंड ऑल्सो टाइप्स भी पूछा गया है. एंड ऑल्सो द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द प्लेसेंटा, लाइक विच वन इज द फीटल, विच इज द मैटरनल, एंड हाउ मच इज द ब्लड सर्कुलेशन. तो ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है. बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटास, जो कि वेलामेंटस, मार्जिनल, देन सक्सेंचुएट, बाइलोप्ड एंड सर्कमार्जिनेट. इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो सकती है ना, जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि विलामेंटस, जैसे कि इफ देयर इज विलामेंटस देन द प्रॉब्लम कैन बी वासा प्रीविया. देन इफ इट इज marginal then the problem can be early separation, detached during delivery. तो ये सारे जो complications हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके. Then going forwards, antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage is of 3 types. 3 types of antepartum hemorrhage we know, that is the placenta previa, vasa previa, and the abruption. The placenta previa occurs as a complication of the filamentous, and abruption means there is already detachment of the placenta. वैसे प्लेसेंटा प्रिया मीन्स प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द यूटेरस. तो प्लेसेंटा प्रिया के सर्टन टाइप्स है, क्लासिफाइड एज लो लाइन एंड कंप्लीट
एंड पार्शियल। तो ये सारे इसके टाइप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है इनके ऊपर, तो इमेजेस भी देख लेना। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, अगर फीमेल को पहले कभी हाइपरटेंशन नहीं था और प्रेगनेंसी में ही आया है एट मोर देन 20 years ऑफ जेस्टेशन, देन वी कॉल इट एज अ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन से रिलेटेड पेशेंट को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, एंड इफ इट इज़ वेरी हाई देन वी नीड टू treat the patient. And other terms related to this hypertension are eclampsia. Eclampsia means due to high blood pressure, the patient will be having seizures. That is called as the eclampsia. इसके मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं MgSO4. A very important question being asked. ठीक है, 1-9 के फॉर्म में पूछा गया है. And pre-eclampsia means there will be proteinuria. एंड प्री क्लैम्सिया मीन्स प्रोटीनयूरिया एंड हाइपरटेंशन, और इसकी जो मैनेजमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन मूविंग ऑन टू डायबिटीज़ मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी. तो यूजुअली जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हम तब बोलते हैं व्हेन वी सी इट एज टू 24 weeks. एंड इफ इट इज़ प्रेजेंट अर्लियर, पहले से ही पेशेंट डायबिटिक है, तो देन इट इज़ कॉल्ड एज ओवर्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस. एंड ओवर्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है पेशेंट को. So you need to learn about the complications related to the overt diabetes mellitus, like the cardiac and the nuclear defects. Okay, so let's move forward, and the next topic is the abortion. Abortion is also a very important topic. A stomach, and usually questions are asked on the types of the abortion. The types. So these are the type of the. So these are the type of the abortion: threatened, incomplete, complete, and missed. Clinical questions usually पूछे जाते हैं कि female has come with the passage of grape-like structure and she is in pain, तो diagnosis क्या होगी. तो based on the complete question कि कौन से points दिए गए हैं, you should choose the best answer कि threatened है या incomplete है या फिर missed है. Okay, then causes of the abortion. The causes are the chromosomal, anatomical, and infectious causes. Then questions are also asked on the basis of the management of the abortion, and it depends on the week of the gestation. कि कितने weeks के gestation में हम कौन सा करेंगे. If it is early, then we will do manual evacuation syringe, and if it is late, then we can do D and पोस्टपार्टम हैमरेज की कॉजेज है कि ये 4 T's से हम इसको यूजुअली याद रखते हैं ना. टोन, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी और टिश्यू रिटेन. तो मोस्ट कॉमन टोन होता है, इसकी कॉजेज याद रखते हैं. एंड हाउ डू वी मैनेज इट बाय यूजुअली गिविंग द ऑक्सीटोसिन, राइट. ऑक्सीटोसिन contracts the uterus and tries to stop the bleeding. And so to prevent this postpartum hemorrhage, in the stage 3 of the labor, we do certain active management. And the components of that active management is giving a prophylaxis oxytocin, then doing controlled contraction, and then giving a massage to the uterus. If we follow all these steps properly, then the risk of the postpartum hemorrhage decreases. And this has been asked like all of the following except a kind of a question. Okay, so this one also is an important topic. The molar pregnancy is of 2 types. We can see the partial molar pregnancy and a complete molar pregnancy. Complete molar pregnancy has a risk of developing into choriocarcinoma. And questions are being asked on the genetic composition of the partial. Partial is usually 46XXX, and it do not survive. And complete is made up of 46XX, and both are from the paternal chromosomes. Okay, so these are some few one-liners asked on the molar pregnancy. Then next topic, the choriocarcinoma. Choriocarcinoma image-based question is asked on the UST. It shows a snowstorm appearance. A frequently asked image-based question, the snowstorm appearance. Okay, and stages of the choriocarcinoma are asked, and in stages one-liner being asked repeatedly is in the stage 3, the metastasis is to the lung. So they can give a clinical case. Female presents to the OPD with complaints of cough, and she is diagnosed as choriocarcinoma. What will be the stage? So it will be the stage 3. Twin pregnancy is also a very important topic. So we know 2 types of twins, monozygotic and dizygotes. So these are the types of the twin pregnancies. Twins, the dichorionic diamniotic, can be seen if the fertilized egg divides in the less than 3 days. If it divides in between 3 to 8 days, then it is called as monochorionic and diamniotic. And monochorionic, monoamniotic between the day 8 to 12. Image-based questions are also asked. And also on USG, we can see 2 signs related to this: the T sign and the lambda sign. Questions are asked also on the complications related to the twin pregnancies. So you should also know the
complications like the breech presentation, then preterm labor, and polyhydramnios, then a mother is a higher risk of taking gestation. And also, how do we deliver the twin pregnancies? If it is breech presentation, then we need to do the cesarean section, and if it is both are cephalic, then we need to do the normal vaginal delivery. So these are all the important one-liners being asked in the topic of the twin pregnancies. Now moving on to the next topic, that is the contraception, a very must do topic. Contraception is asked in relation with the PSM also. PSM के साथ में integrate करके पूछा जा सकता है, ठीक है. So there are various types of contraception like hormonal and then chemical. So you need to know all about them. Certain types are the combined oral contraceptive pills like IUD, very important. Intrauterine devices, copper T, then levonorgestrel, its half-life. Then image-based questions are asked on the IUDs. Frequently asked questions nowadays on the contraception are the Antara injection and the Mala D, which is a combined oral contraceptive pill. Then another important question related to the contraception is the Fern index. It says about the failure rate of the contraception, and the high failure rate is with the condoms. Okay, and other methods of the contraception are the issue ring, then vaginal ring, then sponge. Sponge contains the spermicidal called as linoxide 9. PYQ asked. Then emergency contraception is also a very important topic. The drugs used under this category are the levonorgestrel, which is a best because available very easily, and mechanism of action is also very good. Then other drugs used the mifepristone. Then IUD, which can be used up to 5 days. One liner asked in the Fmge exam. And ulipristal acetate, which also works up to 72 hours. So these were some points. Important points related to the obstetrics, which are usually frequently asked in the Fmge exam. So that's all in this video, guys. I hope this video was useful to you, and if you find it helpful, then please send it to your friends, share it with your friends, and also like and subscribe to my channel. Thank you, guys. Bye bye.